इसकी कॉल आ गई। अच्छा ठीक है। In the last class, what we have covered? Stratification हो गया, and we have started the. Can help with the tasks. Okay. Good afternoon, guys. What we have started? Okay. So about the biodiversity, we have started the concept understanding, right? Yes. Okay. Thank you, Rohit. देखो, biodiversity में what personally I have thought, there's so much content only, ठीक है? And if I'll show you the PYQs from that ecology, the major topic is your like biodiversity से सिर्फ आपके 5 to 6 years में 2 times क्वेश्चन पूछा गया, वो भी simple what is biodiversity, not even it's part of it, बहुत पूछा गया है, so अल्फा बीटा और गामा, ठीक है? So what we can do, हम लोग इसको साथ में मतलब कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करके आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, चलेगा? क्योंकि डिक्टेट करने का इट इज अ काइंड ऑफ अ टाइम वेस्ट। देखो कल पूरा सर्टिफिकेशन का लेक्चर ले गया, ठीक है? सो वी कैन डू दैट। देखो व्हाट इज द सिंपल थिंग अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, दैट द टर्म बायोडाइवर्सिटी, इसमें आपको क्या है कि बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड हो जाएगी। इट इज गिवन बाय द वॉल्टर जी रोजन इन 1986, ठीक है? यूएन, व्हाट इज यूएनसीबीडी? यू गाइस मस्ट नो दैट व्हाट इज यूएनसीबीडी। Other than that, whatever you know about the UNCBD. Okay, so this is your something very important topic for the environment, because of course we have already talked about that. The ecology unit is very important for your geography or the normal GS too. Okay, so there's a three bodies in 1992. The UN body has been come into the conference in that Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ठीक है? So in that there's actually UN की 3 body है which are focusing on majorly the different aspect of that environment. The first is UNFCCC, UN Forest and Climate Change. The second is UNCCD, United Nations Combat and Conserve Desertification, and third is UNCBD, United Nations Convention of Combating Desertification, United Nations Convention of the Biodiversity. There's a 3 body. Every single year what we have thought about, what we listen, जैसे कि अभी लास्ट आपका कॉप कहाँ पर हुआ है? नवंबर 2025 में हुआ है, ठीक है? कॉप 30 if I'm not wrong, ठीक है? Every single year, what is COP? Conference of Parties. So India is a member of all these 3. Yes, India is a member of all these 3. So connecting with that, there's a GS portion topic. So what we have that Paris Climate Deal. What we know about the Paris Climate Deal? थोड़ा तो फायदा होना चाहिए, है ना? GS का भी. What is Paris Climate Deal? Whatever Anushka you know, just tell me, है ना? So that is this kind of discussion. Ozone depleting gases. Okay. Neha, do you know have any idea about the Paris Climate Deal? Online, Manisha, Ashadi, Rohit, and everyone. Whatever the information you know about that Paris Climate Deal, anything information about the Paris Climate Deal? Okay, so Paris Climate Deal
is one of the conference, is one of the COP. ठीक है Anushka, what you have said that, ठीक है. So after the 1992 finally all of the countries or the government come combinedly, वो आते रहे हर ईयर में मिलते रहते हैं. जैसे कि you must have known that Montreal Protocol, सुना है? हाँ. Then we talk about the Cartagena Protocol, then Kyoto Protocol, right? जो आप बता रहे हो वो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है. उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल है, ये आपका 1997 प्रोटोकॉल, ये आपका 1997 और 2013 तक का ही टारगेट था कि वॉट एवर द ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उनका जो है इनिशियल रिडक्शन हो रहा है बिकॉज इट इज इम्पैक्टिंग ऑन द ओजोन. अच्छा, व्हाट इट इज दिस? सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कार्टाजीना प्रोटोकॉल, ये सब जो प्रोटोकॉल्स हैं, देखो एवरी सिंगल, सपोज दैट एक मीटिंग नाम की चीज होती है, ठीक है. मीटिंग सब लोग जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी मीटिंग्स करती है. सो आपकी जो यूएनसीसी है, यूएनएफसीसी है, इन ऑल दीज थ्री बॉडीज, इसका ना सबसे मेजर रोल है. एवरी सिंगल ईयर इन यूएनएफसीसी की मीटिंग होती है. तो व्हेन वी डू द मीटिंग वी शुड हैव द काइंड ऑफ पर्पस दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है. तो 1997 में यूएनएफसीसी का पर्पस था टू रिड्यूस दैट ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस, दैट इज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. गॉट इट? उसका ही अपडेट था, उसका आई थिंक इफ आई एम नॉट वेरी एक्यूरेटली करेक्ट, सो उसका 2002 या 2005 उसका टारगेट ईयर था, ठीक है. तो ऐसे ही इसकी डिफरेंट मीटिंग्स में डिफरेंट टारगेट्स लिए जाते हैं. दैट इज योर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. व्हाट इज द पेरिस क्लाइमेट डील? ऐसे ही जब यूएनएफसीसी की मीटिंग आपकी 2015 में हुई, कहां पर हुई? आपकी पेरिस में. जो फर्स्ट वर्ड होता है वही उसका लोकेशन होता है. जैसे क्योटो, व्हाट इज क्योटो? क्योटो इज अ लोकेशन इन जापान, ठीक है. मॉन्ट्रियल, दीज आर द लोकेशन, ठीक है. सो जब 2015 में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो जब 2015 में यूएनएफसीसी सब लोग बैठे तो उन्होंने कहा वी शुड अडॉप्ट अ डील. एवरीवन सेड ओके फाइन, व्हिच काइंड ऑफ, जैसे कि आपकी इकोनॉमिक बॉडीज हैं, आईएफएफ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, हेल्थ बॉडी है डब्ल्यूएचओ एंड ऑल, ठीक है. ऐसी आपकी इन्वायरमेंटल बॉडी भी है, ये तीन. तो पेरिस क्लाइमेट डील में देयर इज वन थिंग फाइनलाइज्ड, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज योर कॉप 21. मतलब 21 टाइम जब ये बैठे थे, मतलब 21st था उसका. जैसे कि अभी कॉप 30 चल रहा है, सो आप बोलोगे मैम 2015 से 2025 तक सिर्फ इतने ही इंक्रीज हो पाए, तो आपका कोविड में क्या गैप ईयर था ऑलमोस्ट. ये अदरवाइज हर पर ईयर में बैठते हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग्स होती है, पार्टीज होती है, ठीक है. सो जो पेरिस क्लाइमेट डील है, व्हाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट, इनका जो कॉप 21 है व्हिच वाज हेल्ड इन 2015, व्हाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज एट दैट ईयर जैसे कि ओजोन डिप्लीटिंग का एक टारगेट था, इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. आपका एसडीजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन दैट ईयर सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल हैज बीन फाइनलाइज्ड. व्हाट इज द टारगेट ऑफ दिस? 2030, ठीक है. सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग द आंसर्स इवन इन योर नॉर्मल जीएस पेपर्स, ठीक है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कितने गोल्स रखे गए? टोटल 17 गोल्स आर देयर, ठीक है. जैसे कि गोल नंबर 1 है, एसडीजी 1 है आपका, वो आपका नो पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी का. एसडीजी 2 है हंगर, एसडीजी 3, ऐसे करके मल्टीपल आपकी 17 गोल्स है. व्हाई यू नीड टू नो दैट? इसमें आपके जो एसडीजीज है इसमें बहुत सारे इन्वायरमेंटल बेसिस है, जैसे कि यस मरीन लाइफ ऑफ ऑन द अर्थ है ना, कोरल लाइफ प्रोटेक्शन. दैट मींस ये एसडीजी जो हुई थी, इसने ना केवल दिस पेरिस क्लाइमेट और द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इन 2015 में, इट इज नॉट ओनली फोकस्ड अबाउट द एनवायरमेंटल पर्पस, बट इट आल्सो गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है. देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट वी नो दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. जैसे कि जीडीपी टॉक्स अबाउट योर ग्रोथ, whatever the growth in the sense of money, but to produce that amount of money we are exploiting various natural resources, ठीक है. उसको हम लोग कभी भी जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं. तो all of the countries has said that now we focus on that development, not the growth. जैसे कि suppose that overall इंडिया की जीडीपी मान लो 8.2% से इंक्रीज कर रही है, but still India is one of that very high in inequality country. मतलब there's a very high inequality. जो upper 1% है, they have consisting all of the major words. जो आपके lower की 80% population, उसके पास कोई भी word as such नहीं है, ठीक है. So that is a kind of SDG goal. इसी तरीके से मतलब इसमें सामने हुआ था. तो बायोडाइवर्सिटी की बात, एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, वैसे तो हम लोग अगर सपोज दैट डिफाइन करेंगे बायोडाइवर्सिटी, वी कैन सिंपल टॉक अबाउट दैट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. दैट मींस व्हाट इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बिकॉज इन द बायो द स्पीसीज जनरली कंसीडर्ड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट, राइट. So we can say that simple, the number of species or the variation in any particular area, region or overall the global community, that is simple biodiversity.
दिस इज ऑल्सो डेफिनेशन यू कैन मेंशन, बट बेटर है कि इसी डेफिनेशन को आप कैसे लिखो, विद रेफरेंस टू द पर्टिकुलर डेफिनेशन। तो इन्होंने क्या बोला, इसमें आप सिंपल ये लिख सकते हो, दैट इज यूएनसीबी, दैट इज आर्टिकल 2 ऑफ यूएनसीबीडी। ये आपका 1992 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई जस्ट एड इट, 1992 में जब रियो डी जेनेरियो में ये मीटिंग हुई थी, देन दे डिफाइंड व्हाट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। ये बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा लिखना आपकी कॉपी में, है ना। That is what is biological diversity means a variability among living organisms from all the sources including inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystem, and that ecological complexes of which they are part. Of which they are part. This includes the biological diversity within the species and ecosystem. Simple. आपको if you want, of course you can define in a very simple language, but if you try, if you can remember, please mention this definition. ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड आपका है, जैसे कि whenever we talk about any definition we give some kind of scientist name, ठीक है। इसमें पता क्या होगा, ये सारे स्टेटमेंट लिखने से ना, you do not need to think about the introduction, है ना, बहुत इजीली आ जाता है इंट्रोडक्शन लिखना। That biodiversity is a combined diversity at all the levels of the biological organization. Simple, ठीक है। फिर ऐसे डिस्कशन किया गया, although we'll talk about later, that how do we measure the biodiversity. Then there came the two concepts. The one concept is about that species richness and second concept is about that species evenness. ये भी इसमें elaborate है, species richness and species evenness. Species evenness, ठीक है। richness obviously it's a very simple term, I don't think I need to elaborate. rich मतलब how many number of species, ठीक है। suppose that if you are thinking of, tell me any ecosystem, suppose that Himalayan, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में I am not talking about the total number of individual, no, I am talking about again last कल वाला कि एक आपकी ये स्पीसीज है, एक आपकी ये स्पीसीज है, एक आपकी ये स्पीसीज है, ठीक है, एक आपके ये स्पीसीज है। दैट मींस नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज is about that richness. Why not the individual? Because individual of any species can be together, ठीक है। richness का मतलब that particular ecosystem or that particular area can able to support the different variety of species, ठीक है। जैसे कि suppose that if you are having a good food, but that particular food you are having that on a daily basis, will you say that you are rich people? No, the rich people generate richness मतलब when you have the diversity, when you have the options, ठीक है, options in sense of that species. Then we talk about the species evenness. What is even number? Similar, यहाँ पे evenness में we always compare the two. जैसे कि कल बीटा डाइवर्सिटी में कंपेयर करेगा, although I'll explain it again. That means species evenness, देखो इसमें जैसे बेटर इसको एग्जांपल के थ्रू देखो, देखो biodiversity is a variety of organisms present in that ecosystem. What we can see here, देखो what we can see here, this is a richness, the number of different species present, ठीक है, that is your richness. इसमें हमने क्या देखा, एक बटरफ्लाई है, एक ये ड्रॉस ऑफ whatever it is third one, that means total 3 species है, that more species therefore highest richness. What is the evenness? If a habitat has similar abundance for each species present, the habitat is said to be have evenness. जैसे कि सपोज दैट इसमें काउंट करो, सो इसमें ये वाला जो ब्लू कलर वाला है ना, ग्रास ऑफर, हाउ मेनी आर दे? 2। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। सो इफ वी टॉक अबाउट द स्पीसीज इवननेस, इसका सबसे हाईएस्ट होगा, फिर 1 2 3 एंड 4। सो यही बोल रहा है व्हाट इज इवननेस, मतलब कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज इफ फाउंड इन एनी काइंड ऑफ इकोसिस्टम, हाउ इवनली इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। दैट मींस सपोज दैट if this room is able to survive like maybe 5 species, ठीक है, so in 5 species में which species are able to have the more number of, कितना even हम कर सकते हैं, ठीक है। greatest evenness as the two population have the similar abundance, देखो इसके 5 है, इसके 4 है, इसका 1 है, that means बहुत ज्यादा even अभी भी नहीं है। suppose that 5 species है and total number of population and total number of individual in any area is 25, ऐसे कंसीडर करो इसको। Suppose that in any area there is a total number 1 2 3 4 जितने भी आपने काउंट करे, that is your 25, but you have seen that in 25 there is a total 6 number of species, जैसे कि एक कॉकरोच है, एक एंट है, ऐसे करके 6 लोग हैं। सो इन 6 को अगर हम लोग सपोज दैट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एटलीस्ट 4 सब में आएंगे, मिनिमम 4 आएंगे सब में, है ना, 6 4 24, एक किसी में एक्स्ट्रा आएगा। दैट मींस अगर ईच स्पीसीज
have the 4 number of individual. That means ये वाला जो ecosystem है, it is showing that it is very even in number. That means this particular ecosystem can support almost equal number of species of each one. That is evenness, है ना? ऐसे बोलते हैं ना, distribute that particular thing evenly. Got it? That is evenness. ठीक है, species richness and evenness measurement. Okay. Species richness and evenness in measuring the terms of the biodiversity. ठीक है, then we'll talk about what is biodiversity, then types of biodiversity. Types of biodiversity में I have already explained that the type of biodiversity is actually mainly on the basis of 3. The first one is a genetic. ठीक है, the first one is a genetic, second one is a species, and third one is a ecosystem. Third one is the ecosystem. Diversity means, देखो, if we are dividing these type of diversification, that means what is diversity? Like suppose that if I'll say in this room, how many, like, is there any diversity in the chairs? Yes, this is a 1, this is a 2, and that is a 3. That is the 3 types of chair, but ultimately all of the chair. That is about ultimately everything is the animals or the organism. ठीक है, that is, देखो हम लोग अगर suppose that वही again I think I have explained that अगर हम लोग उसका क्या कहते हैं डॉग का एग्जांपल लें, ठीक है, सो डॉग सपोज एक इकोसिस्टम है, दैट इज योर इकोसिस्टम. यहाँ पे आपका डॉग भी है, यहाँ पे आपका कैट भी है, देयर इज अ लॉयन आल्सो, देयर इज अ हॉर्स आल्सो, ठीक है, एंड देयर इज अ मे बी वन मोर थिंग, मे बी ह्यूमन आल्सो. ठीक है, ये बता रहा है. हेलो जी, yes, so what it is showing, that means different types of species over are there. ठीक है, but suppose that if we take one only, अगर सबको हम लोग erase कर दें, suppose that अगर मैं यहाँ पे लाके एक जर्मन शेफर्ड, ठीक है, एक जर्मन शेफर्ड आपका रख दूं, एक आपका रख दूं गोल्डन रिट्रीवर, एक आपका रख दूं टिबेटन मास्टिफ, और एक आपका रख दूं लैब्राडोर, क्या बोलोगे आप सबको? सबको आप डॉग बोलोगे, बट यू कैन सी द डिफरेंसेस. जैसे कि इस रूम में एवरीथिंग इज अ चेयर, बट वी कैन सी ये अलग होगा, गोल्डन रिट्रीवर भी डिफरेंट है ना, इंडियन डॉग भी रख दो, उसको रिमूव करो, मास्टर है. So but we can see the diversity in all of that. ठीक है, that means एक डॉग का आई थिंक साइंटिफिक नेम होता है ल्यूपस करके कुछ होता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, दिमाग पे याद नहीं है. कैट फैमिली का ही होता है वो, ये वाले जिनके दांत निकले होते हैं. ठीक है, बट व्हाट वी कैन सी अल्टीमेटली दिस ऑल अबाउट द डॉग. ठीक है, दैट मीन सिंपल. बट अगर वहीं पे एक अदर इकोसिस्टम लाके रखो, एक अदर जैसा अनदर इकोसिस्टम, देयर इज एक्चुअली कैट प्लस देयर इज अ मे बी लॉयन plus there is a leopard plus there is a tiger. ठीक है, yes they are the different family, but because of the different level of reasons, ठीक है, वो evolution हम लोग करेंगे, what is the reason of the speciation, they are the different species. ठीक है, ये आपका हो गया कितनी species, या फिर ये वाला कंसीडर कर लो ह्यूमन है, डॉग है, मंकी है, whatever, that's the different species. Then we talk about that ecosystem में हम लोग बात करते हैं, what we talk about ecosystem, what we talk in the ecosystem diversity. If you want you can try, you can include in there also. If you want you can write it separately also. ecosystem diversity में we talk about again क्या है ecosystem में diversity. Actually ecosystem diversity में better ऐसे consider कर लो, alpha, beta and gamma. alpha में how many numbers of species, so you can tell me ma'am ecosystem का जो alpha diversity है, that is, don't you think exactly about that species diversity, वही तो है ना. बट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज एक्चुअली द टाइप ऑफ मेजर ऑफ हाउ मेनी पीपल और हाउ मेनी स्पीसीज. हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इकोलॉजी में, व्हाट इज द रीजन टू स्टडी द इकोलॉजी? yes, to see that particular ecosystem can able to survive. If that particular ecosystem is able to survive the number of species, that means it is a healthy environment, right? different लोगों को आप host कर पा रहे हो, that means you have a good tolerance, you have the all kind of facilities, that means it is a very stable. ठीक है, सो वही आपका अल्फा है. अल्फा मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, जैसे कि एक स्पीसीज ये है, एक स्पीसीज ये है, ठीक है, दैट इज योर अल्फा डाइवर्सिटी. व्हेन वी टॉक अबाउट द बीटा डाइवर्सिटी, आई हैव एक्सप्लेन इट, बेटर है पीडीएफ से कर लेते हैं.
ठीक है, देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी में आई हैव एक्सप्लेन इट. जेनेटिक डाइवर्सिटी में एक्सप्लेन है दैट जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ द हेरिडिटरी एंड दिस इज, इसमें आपका प्रॉपर मैकेनिज्म है दैट एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन हैज अ स्लाइटली डिफरेंट जेनेटिक कोड. जैसे कि आपका एक राइस का होता है ओराइजा सटाइवा, ठीक, सम ऑफ द राइस, जैसे कि अल्टीमेटली यू विल सी दिस राइस, है ना. आप लोग जब केरला कभी जाना, ठीक है, तो केरला में जनरली आप लोग जब आपने अगर राइस का फील्ड देखा होगा, सो विच काइंड ऑफ इरिगेशन वाटर इज रिक्वायर्ड, ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर, दैट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेश वाटर. That means normal crops cannot grow into that marine water, otherwise water की कभी प्रॉब्लम होती ही नहीं, हम लोग हमेशा वाटर वहीं से सप्लाई करते हैं. बट व्हेन यू गो टू केरला ना, केरला में लो मरीन लेवल का राइस ग्रो होता है. दैट मीन्स अल्टीमेटली वो क्या है, एग्जैक्टली, बट अल्टीमेटली दैट इज योर राइस ओनली, है ना. इफ यू बाय यू विल जस्ट से कि राइस दो, बट वहां पे थोड़ा सा जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया होगा, सो दैट पर्टिकुलर राइस इज एबल टू survive in that low sea level and better can say that little marine water too. अगर जो आप लोग नॉर्मल राइस ग्रो करें, सपोज एट यूपी बिहार यहाँ पे, तो वहां पे आप मरीन वाटर डाल के देखो, दैट पर्टिकुलर राइस कैन सर्वाइव, नो. बट अल्टीमेटली वी आर सीइंग दैट राइस, दैट इज योर जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो. यही पे डिफरेंस है गाइस, जस्ट रिमेंबर दैट, यही पे डिफरेंस आएगा आपका जीएमओ में, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में, और नॉर्मल हाइब्रिड प्लांट में. बिकॉज वन ऑफ द क्लास आई वाज एक्सप्लेनिंग इन द नॉर्मल साइंस क्लास, जैसे बट दोनों में तो दोनों में जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है, बट उसमें प्रॉपर्ली डिफरेंट बैक्टीरिया को ही जोड़ दिया जा रहा है ना, एग्रोबैक्टीरियम. चलो वो भी बाद में बात करते हैं, ठीक है. उसके बाद स्पीसीज डाइवर्सिटी का भी कॉन्सेप्ट है. स्पीसीज डाइवर्सिटी वी टॉक अबाउट, आई हैव यहाँ पे एक्सप्लेन दैट स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस. इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी मतलब फॉरेस्ट इकोसिस्टम का डाइवर्सिटी कितना, जैसे कि सपोज इफ यू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, सो कंपेयर द डेजर्ट इकोसिस्टम, then compare the forest ecosystem. What do you think, which ecosystem will survive more number of species? ठीक है, that is one of the way that ecosystem में हम लोग ये भी बात करते हैं कि suppose that if I am comparing that for alpha क्या है, alpha इसमें जो हम लोग further divide करेंगे, इसमें we'll further divide that alpha, beta and gamma biodiversity. alpha क्या है, the total number of species in the forest one, ठीक. as you are moving from the forest, जैसे कि अमरकंटक प्लेट्यू में आप जाओ, तो आपका फ्लैट लैंड से आप प्लेट्यू उसमें जा रहे हो, हल्का सा माउंटेनियस में, ऑब्वियसली वहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज कम सर्वाइव कर पाएंगे. दैट इज योर बीटा डाइवर्सिटी. बीटा डाइवर्सिटी एक बार थोड़ा सा देख लो अच्छे से. इफ इट विल नॉट बी अंडरस्टूडेबल, जस्ट रीड वंस एंड देन आस्क मी अगेन. बीटा डाइवर्सिटी इज सिंपल कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन द इकोसिस्टम, जैसे कि आपकी फ्लैट लैंड और आपकी माउंटेनियस, ठीक है. दिस इज अ कंपैरिजन, ऑलवेज रिमेंबर दैट. यूजुअली मेजर्ड as the amount or the number of species change between the ecosystem, ठीक है. जैसे कि अगेन इफ यू टॉक अबाउट द कोस्टल एरियाज, ठीक है, कोस्टल एरियाज का जो आपका होगा, वहां पे या तो नंबर इंक्रीज होगा या तो नंबर डिक्रीज होगा. दैट इज अ कंपैरिजन. सो इफ वी आर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ स्पीसीज इन द कोस्टल एरिया, दैट मींस ईदर वी आर कैलकुलेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द टेरेस्ट्रियल और विद रिस्पेक्ट टू द एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है. नेक्स्ट, दिस इज अ डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन टू हैबिटेट्स और रीजन. It is calculated by the following equation. Equation रहने दो, अभी पहले ये देखो. Beta diversity measures the change in the species composition. जैसे कि in the last class when we have talked about यहाँ पे coastal वाला और the ecotone, one of the feature what we have written that ecotone or such area will constitute that maximum number of species. How did we calculate? Because of the beta diversity. समझ आया? What is the significance of the beta diversity? Yes, overall the calculation between two different ecosystem or along an environmental gradient. एक बहुत अच्छा point था इसमें. देखो, how many species are unique to each site when you compare that? That is your edge effect. Like some species have the developed unique character in that coastal area. That means that is your edge effect. Because of that combining effect, that particular species adapted or developed some specific kind of characters. ठीक है? Yes, ये बहुत अच्छा है. देखो, कब बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी हाई? अल्फा में तो सिंपल नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम दैट इज हाई एंड लो, सिंपल. हाई बीटा डाइवर्सिटी कब बोलेंगे? अकर्स व्हेन two neighboring areas have very different species. Example, forest next side to grassland. Low beta diversity कब बोलेंगे? Occurs when the same species are found in the both areas. Example के थ्रू समझो, it's very nice. Example क्या कह रहा है? If site A, suppose that ये site A है, has a 10 species. यहाँ पे कितने हैं? 10 species. इस site B also has a 10 species. ठीक है, A के पास भी और B के पास भी 10 species है. But they share 0 species in common. ठीक है,
यहाँ पे सपोज दैट मैमल की स्पीसीज ऐसे कंसिडर करो, यहाँ पे सपोज दैट ए जो इकोसिस्टम है दैट इज सपोर्टिंग ऑल द मैमल स्पीसीज, 10 जो आपकी स्पीसीज है वो सारी मैमल्स की है, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट मैमल्स में डिफरेंट डिफरेंट वी हैव, बट आपकी जो बी है, बी इकोसिस्टम है that is supporting all of the species of the arthropods. Arthropods में we have different different है ना, insects we have supporting, then crustaceans and so many. That means nothing, is there anything will be common? No. तो वहां पे क्या होगा? The beta diversity is very high. What does that mean? That means yes, that means हमने यहाँ पे beta diversity में first line क्या पढ़ी? The comparison. Comparison generally we occur जैसे कि grassland से हम लोग mountain की बात करें. So generally beta diversity में we compare the nearby area. That means overall what we can understand? This ecosystem has a very, very, very quite different type of climatic factors. Because of that, they are supporting totally different type of, that means climate varies. ठीक है, जैसे कि पोलर एरियाज पे आप जाओ, बट जैसे ही आप पोलर जब अल्टीट्यूड पे, जब सपोज दैट यू आर एट द माउंटेन अल्टीट्यूड, एज यू आर गोइंग डाउन मे बी वो वाली स्पीसीज यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं पाई जा रही है. दैट मीन्स दे हैव द कंप्लीटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट टू सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज. समझ आ गया बीटा डाइवर्सिटी कब हाई है? ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ बैड थिंग, डिपेंड्स ऑन व्हाट. वेरी गुड. अगर एडजेसेंट है, इफ द एडजेसेंट है देन so that they can survive. Yes. Yes, yes. Overall it depends. But suppose that even if you are saying कि आपका ये वाला जो ग्रासलैंड था यहाँ पे आपकी 10 स्पीसीज थी एंड जस्ट एडजेसेंट आपका जो ये है वहां पे आपकी 12 स्पीसीज थी, बट दे आर नॉट कॉमन. सो दैट मीन्स ओवरऑल इसका इकोसिस्टम सपोर्ट बहुत अच्छा है. दैट्स व्हाई दे कैन completely throw a different kind of species. ठीक है, उसके बाद क्या, if they share all the 10 species the beta diversity is 0. जो यहाँ पर पाई जा रही है वो यहीं पर पाई जा रही है. That means equal ना. If we are comparing two different kind of ecosystem, think of the ecotone. अगर whatever the species found in the terrestrial, वही सारी species आपकी coastal areas में पाई जा रही हैं, ठीक है, ecotone में पाई जा रही हैं. Is there any benefit to form a ecotone? No, right? If the mangroves can found here, that means mangroves are one of that adaptable for such kind of space or such kind of ecosystem. ठीक है, तो beta diversity should be high in such kind of ecosystem. गामा डाइवर्सिटी क्या है? अल्फा और बीटा को मिला दो वही है गामा, कहीं पे फॉर्मूला लिखा होगा, गामा इज इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा. ठीक, क्योंकि बीटा में व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड द एडजेसेंट वन. सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट दैट ओवरऑल, सो दैट मींस अल्फा में सपोज दैट 10 था, बीटा में सपोज दैट 10 into 12 था, सो टोटल नंबर विल बी वेरी हाई. ठीक है, क्योंकि अगर 10 into 12 मतलब हम लोग बिल्कुल अलग अलग कंपेयर कर रहे हैं. अगर यहाँ पे बीटा को हम लोग 0 कंसीडर कर दें तो गामा विल बी 0. समझ आ गया? दैट इज योर गामा. ये सिलेबस में है आपका. स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज इवननेस समझ आ गया है ना? हाउ इवनली एनी स्पीसीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दैट पॉपुलेशन. अगर ड्रोसोफिला की है, सपोज दैट इन एनी इकोसिस्टम इफ द ड्रोसोफिला इज इन द नंबर ऑफ 10, cockroaches in the number of 8, and humans are number of 9, and in another one the Drosophila is in the number of 10, humans are in the number of 2, and cockroaches is in the number of 20. Which will be the species evenness will be higher in A or in B? No, Neha. Evenly तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, 8 9 10, इट्स अ वेरी क्लोज टू ईच अदर बच्चा. इवननेस, इसीलिए मैंने एग्जैक्टली सेम स्पीसीज रखी है. दे आर नॉट इवन. एक का 10 है, एक का 20 है, एक का 2 है. दैट्स वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. यहाँ समझ आ रहा है? इवननेस हमें देखना है. इस फर्स्ट डायग्राम में देखो हमने क्या देखा है. क्या देख रहे हैं? वही 3 स्पीसीज सपोज दैट ले रहे हैं. इसके नंबर 4 है बटरफ्लाई के, इस छोटे से इंसेक्ट्स के नंबर 5 है. whatever evenness देखो ना, very simple term, whatever the number of species are present, उनकी individual should be closely aligned with each other.
अगर एक 5 है, एक 6 है, एक 7, सपोज दैट एक की 100 है, एक की 5 है, एक की 50 अराउंड है, आर दे इवनली? मतलब आपने सपोज दैट टेम्परेचर मान लो वहां का एक रिसोर्स है, सो दैट टेम्परेचर में भी दैट एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज, मान लो इसने क्या कहते हैं बटरफ्लाई ने उसको मैक्सिमम ऑब्जॉर्ब कर रखा है, बट मे बी ड्रोसोफिला ने उसको बहुत कम ऑब्जॉर्ब करा है, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इवन मतलब इक्वली कितने अवेलेबल है, इवन को ऐसे याद कर लो इक्वली, किसी भी any ecosystem if any species are present in that equal in number, that is even, ठीक है? वो आपका बीटा बायोडाइवर्सिटी है जो आप आंसर कर रहे हैं, ठीक है? बीटा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे ना, यहाँ पे एक ही तो इकोसिस्टम है, समझ आ गया डिफरेंस है स्पीसीज इवननेस में और बीटा डाइवर्सिटी में। बीटा डाइवर्सिटी में वी ऑलवेज कंपेयर द टू डिफरेंट इकोसिस्टम, इन दैट इवननेस वी टॉक अबाउट ओनली वन। जैसे कि सपोज दैट आप लोगों ने एमएससी में या कभी भी ग्रेजुएशन में आप लोगों को कभी ओके यू इफ यू हैव एवर डन कि एक ग्रासलैंड है, स्पीसीज इवननेस आप लोग बायो में पढ़ोगे, स्टैटिक्स में पढ़ोगे, इसमें जैसे उसमें उसमें है स्पीसीज इवननेस का कॉन्सेप्ट, तो यही समझ लो। सपोज दैट आपको एक ग्रासलैंड मिला है, ठीक, आपको ग्रासलैंड में यू हैव टू कैलकुलेट दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पीसीज आर देयर, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, रिचनेस, ठीक है? अब आप इसमें कैलकुलेट कर रहे हो, सपोज दैट इस ग्रास में पर्टिकुलर इस ग्रास में देयर इज एनी काइंड ऑफ रिसोर्स, सो इज दैट रिसोर्स सपोज दैट सल्फर है, जस्ट रैंडम एग्जांपल, सपोज दैट पर्टिकुलर ग्रासलैंड में वो सल्फर कंटेन कर रही है, सो दिस सल्फर इज, if this sulfur is good for the ants, is good for the cockroaches, is good for the drosophila, तो स्पीसीज इवननेस क्या होगी, हाई होगी, ठीक है? बिकॉज एवरी, जैसे कि पूरा ग्रासलैंड है तो उसमें कॉकरोचेस के नंबर भी अच्छे से, जैसे कि कॉकरोच के नंबर भी मे बी इसमें होंगे 20, ठीक है? एंट्स के नंबर भी इसमें होंगे मे बी 18, ठीक है? और क्या ड्रोसोफिला के भी नंबर होंगे मे बी 21, बिकॉज दैट पर्टिकुलर रिसोर्स इज गुड फॉर एवरीवन, समझ आ गया? बट सपोज दैट दिस सल्फर इज नॉट गुड, ठीक है? तो क्या होगा, द एंट्स के नंबर में भी, मान लो एंट्स के लिए सिर्फ अच्छा है तो एंट्स के नंबर होंगे मे बी 18, ठीक है? ड्रोसोफिला के नंबर में भी होगा 3, ठीक है? और कॉकरोचेस के नंबर में भी होंगे 7। इज दिस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस रिसोर्स इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस और इन दिस, ए और बी? अभी समझ आ गया? दैट इज स्पीसीज इवननेस। इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है? इसको कैलकुलेट करने के वी हैव द सिम्पसन सैनन इंडेक्स एंड सैनन व्हीलन इंडेक्स। कभी पूछा नहीं गया है, आईएफएस में पूछा गया है, आई विल जस्ट इंक्लूड इन दिस पीडीएफ, ठीक है? मैं इंक्लूड कर दूंगी और उसको समझा दूंगी, उसमें कुछ एज सच कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कोई डाउट है पक्का अभी तक? ऑनलाइन एनी डाउट? ऐशाली? ओके फाइन। देखो उसके बाद ये है वही है, मतलब इसका हमने सिंपल सा वो करा है, थोड़ा सा लोग इन चार्ट फॉर्म में, सो दैट यू कैन मेक इट इन अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म, दैट्स इट, उसका वही है। उसके बाद सिंपल है कि वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी के, व्हाई द बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, तो उसको हम एक्चुअली दो टर्म्स में रखते हैं, द वन इज डायरेक्ट वैल्यू एंड द सेकंड वन इनडायरेक्ट वैल्यू। अब इसको मैं डिक्टेट करके आप लोगों के हाफ एन आवर और मे बी 1 आवर स्पॉइल करूं, आई डोंट थिंक दैट्स नेसेसरी। कंजम्पटिव यूज वैल्यू है, ऑफ कोर्स आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, है ना? देन आपका प्रोडक्टिव यूज वैल्यू है, जैसे कि खाने के लिए आपको फ्रूट्स मिलते हैं, दैट्स कंजम्पशन। प्रोडक्टिव यूज वैल्यू मतलब फर्नीचर, राइट? फिर आपका सोशल वैल्यूज है, यस सोशल वैल्यूज है, ट्राइबल पॉपुलेशन लिव ओवर देयर। देन वी हैव द एथिकल वैल्यूज, यस ट्राइबल पॉपुलेशन हैज सो मेनी कल्चरल एंड सिग्निफिकेंस ओवर देयर, जैसे कि वो जो आपका अफॉरेस्टेशन में झुमरी, व्हाट इज द नेम ऑफ उत्तराखंड का, जहाँ पे वो पेड़ काटने से पहले उसको गले लगा लेते थे। इवन राजस्थान में अरावली में भी यही हुआ, यस वहां पे भी यही हुआ। यू कैन गिव सच एग्जांपल दैट एस्थेटिक वैल्यू, जितनी भी आपकी ब्यूटीफुल एस्थेटिकनेस है किसके कारण है, फॉरेस्ट के कारण ही है। if you see one of that Hollywood movie, अगर just consider that forest will be degraded, है ना, तो आप क्या देख पाओगे लैंड पे, कुछ भी नहीं रहेगा। डिजर्ट में आप क्या देख पाते हो, नथिंग। लाइक डेजर्ट भी काइंड ऑफ इकोसिस्टम है, बट स्टिल दैट अभी डेजर्ट में if you see the ecosystem, cactus has a flower, some cactus does not have the flower। if you go like, ऐसा क्यों बोलते हैं कि ह्यूमंस को नेचर, वो जब नेचर में जाता है तो उसका माइंड ऐसा और एक्सप्लोर होता है, बिकॉज दैट इज योर समथिंग एस्थेटिक और ऑप्शनल। ऑप्शन वैल्यू में मतलब आपका जितने भी सारे वही है, इसको हमने इलाबोरेट किया है, ठीक है? डायरेक्ट वैल्यू में कंजम्पटिव को देखो, प्रोडक्टिव को, सोशल को, ठीक है, एथिकल को, एस्थेटिक को, ठीक है? फिर ऑप्शनल वैल्यू में आपका क्या है, मरीन इकोसिस्टम, ट्रॉपिकल इकोसिस्टम, जिस भी टाइप का इकोसिस्टम आप कंसीडर कर सकते हो। फिर सर्विस वैल्यू में क्या है आपकी,
That is, it refers to the service provided the ecosystem, that is prevention of soil erosion. Roots bind करती हैं. हाँ बच्चों, आप रिलीजियस भी लिख सकते हो, एस्थेटिक में भी लिख सकते हो और एथिकल में भी लिख सकते हो. ऑब्वियसली यू कैन ऐड दैट. ये तो मतलब समथिंग इट्स योर ओन है ना, जिस पेपर 3 में भी आज जहाँ पे भी आप लिखना चाहो उसको लिख सकते हो. प्रिवेंशन ऑफ द फ्लड्स है ना, एक्सेप्ट देयर ओन डायरेक्ट बेनिफिट, दे आल्सो प्रोवाइडिंग दैट इनडायरेक्ट बेनिफिट. व्हाई यू आर प्लांटिंग द मैंग्रोव प्लांट इन द कोस्टल एरियाज? मैंग्रोव का जो अपना बेनिफिट है, दैट दे आर प्रोवाइडिंग द शेल्टर, दे आर प्रोवाइडिंग समथिंग लाइक दैट. बट एक्सेप्ट द ओडिशा, ओडिशा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा, जो भी आपके ईस्ट कोस्टन के आपके स्टेट्स हैं उनमें सबसे अच्छा प्रोग्राम आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन को प्रिवेंशन करने का ओडिशा ने कर रखा है. ओडिशा ने फुल कोस्ट को आपको मैंग्रोव से कवर कर रखा है. सो ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ डिफरेंट थिंग. You as a people, as a population is a different thing. Mangroves as a different thing. Still, we are using the mangroves to control the negative or the hazard condition or the impact of the tropical cyclone. That are this indirect value. ठीक है, so वही है इसमें. उसके बाद बाजू, अच्छा उसके बाद क्या है, बाजू के क्लासिफिकेशन है. क्लासिफिकेशन कभी भी नहीं पूछा गया है. There's a major 10 classification trans Himalaya, but आपका biodiversity hotspot पूछा गया. What is a biodiversity hotspot? Any idea about that? Okay, so you are saying that a particular species should be specific for that kind of ecosystem. That is your biodiversity hotspot. हाँ मतलब है ना, यही बोल रहे हो ना. That is, you guys want to say that endemic है ना. हाँ मतलब वो वहाँ की dominant species हो, है ना, so that they can survive properly as a dominant one, right? Okay, so we know the difference between the natural park, wildlife sanctuary and biosphere reserve. Do we know the difference between both? Wait, I'll just sure. What is a natural parks? What is a wildlife sanctuary? And what is a biosphere reserve? First of all, tell me what is the similarity of all. Very good. These are for the conservation of species. Next, एक और similarity है. First similarity is the conservation of species. Second one, ठीक है, studies, conservation and studies. और accurately जाएं, अगर suppose that what is the similarity and the difference of the national park and the zoo? Now tell me. Okay, and national park is not? So when we talk about, suppose that you are from Rajasthan, right? Tell me the any national park from the Rajasthan. Ranthambore, Gir, ठीक? अच्छा सॉरी, या गिर इन दिस गुजरात. काजीरंगा तो आसाम में है, ठीक है. रोहित, you are from I think Andhra, right? Tell me one of the national park of your area. Aishali? National Park and Jodhpur. You are from, first of all, you are from, I think West Bengal. Yes, no. Okay, Jaldapara. Yes, Jaldapara National Park. Yes. Rohit, tell me your one of the national park of your state. Nagarjuna Tiger. Nah, that's a tiger reserve. No, I am asking the national park because I want to differentiate. You are from Andhra Pradesh, right? Okay, so Andhra Pradesh has one of the very specific thing about that national park, that India's largest national park is here in Andhra Pradesh. ठीक है, उसको श्री शाइचालम आई थिंक नेशनल पार्क, उसको डिस्ट्रीब्यूट, इसको डिवाइड कर दिया गया है. स्टिल इट इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क. इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपका श्री शाइचालम नेशनल पार्क है, जो कि आंध्र प्रदेश में. ठीक है, चलो. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल पार्क एंड द जू? बहुत बेसिक है. लिमिटेड रिसोर्स. Focuses on the conservation of particular endangered species, whereas the wildlife sanctuary is focused on
the conservation of the wildlife as a whole. Not exactly, but okay, relatable. I just want to hear the answer which is relevant for all of you for the prelims. Yes, please. Animal species conservation. In national park, we conserve both animal as well as Flora and fauna. आंसर तो आना ही चाहिए. Now tell me the difference between all these three and all these two. अब तो बता दो यार. इसको साथ में रखना है, उसको अलग रखना है. This is a one group A, this is a group B. And that particular term which I want to hear, which already came into your exam. useful for scientific studies. That also for useful scientific studies. Laboratory studies. Be more. Go to in that direction also. Think of it. Rohit, answer me, na? All of you, anyone can give the answer just about that. It's a very one term, और वो one term आपको पूछा गया है. आपके GS पेपर 3 में भी पूछा गया है, GS पेपर 1 में भी पूछा गया है, आपके प्रिलिम्स में पूछा गया है, और आपके जोलॉजी ऑप्शन में भी पूछा गया है. That one term which I want to listen, and I know every one of you know that. थोड़ा दिमाग लगाओ. What did you say, Neha? Taxonomical classification नहीं, वो तो नेमिंग में आ जाएगा. ऑनलाइन देखो, ऑफ कोर्स आई कैन टेल यू, बट द थिंग इज आई रियली वांट टू लिसन, थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए. नेशनल पार्क वाइल्डलाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय रिजर्व को अपनी जगह से वेरी गुड. एग्जैक्टली दैट व्हाट इट इज कॉल्ड, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन. हाँ, अभी आया दिमाग में. गुड, नाइस एफर्ट. देखो, ऑफ कोर्स मैं इसको बहुत पहले बता सकती थी, बट आई नो दैट यू गाइस नो दैट. ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन इज दिस. आपके प्रिलिम्स में भी पूछा गया है. ठीक है, एंड दीज आर योर एक्स सीटू कंजर्वेशन. आपके जीएस पेपर 3 में भी ही क्वेश्चन है. ठीक है, इन सीटू मतलब वेयर एवर दे आर, उनको वहीं पे हम प्रोटेक्ट करेंगे. जैसे कि आपका प्रोजेक्ट टाइगर, राइट, श्रीशाजालम या फिर जिम कार्बेट नेशनल पार्क या कोई भी नेशनल पार्क. तो when we form that national park, suppose that मुझे इस चेयर को कंजर्व करना है, बिकॉज इन सब में सिर्फ ये सिंगल है. तो अगर मैं, बट स्टिल इट इज सर्वाइविंग ना, राइट, it is already in a very different condition, very difficult condition. Suppose that if I will, जैसे कैसे कंसीडर करो, कभी भी आप वहां पर जाओ, कोई अच्छा सा प्लांट देखो, ठीक है, और आप उसको चाहो कि आई वांट टू ग्रो दिस प्लांट इनटू माय होम, आप उसको वहां से प्रॉपर रूट्स के साथ ऐसा प्रॉपर रिमूव करो और अपने घर में लगाओ, उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, होती है, ऑब्वियस सी बात है. बिकॉज जो उसका नेचुरल एनवायरमेंट था, वहां से आपने उसको थोड़ा सा तो रिमूव करा. ठीक है, आप उसको बहुत सारे न्यूट्रिशन और ये सब दे रहे हो, दैट मीन्स आप उसको उसकी इन नेचुरल प्लेस से आप रिमूव करके अपने घर पे लगा रहे हो. दैट इज योर जूलॉजिकल जू पार्क, है ना. जैसे कि आप जू पार्क देखो, ऐसे होता है ना, गवर्नमेंट ने जू बनवाए हैं. जैसे कि आप दिल्ली में देखो या किसी भी आप जहाँ पे एरिया में, वहां पे जो जूज होते हैं, चिड़ियाघर जो होते हैं, वो स्पेशली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. while the national park and the wildlife sanctuaries are generally, जहां पर वो है उन्हीं को, उस एरिया को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है. सो दैट इज समथिंग. इन सीटू कंजर्वेशन, जहां पे पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट या जो भी स्पीसीज को उसी एरिया में कंजर्व किया जाता है. सो हियर द इकोसिस्टम प्लस वो एनिमल वहां पे कंजर्व हो रहे हैं. जो एक्स सीटू कंजर्वेशन है, व्हाट इज बोटानिकल गार्डन. बोटानिकल गार्डन में आप क्या करते हो, जगह जगह से प्लांट्स लेके आते हो और उसको वहां पे बनाते हो, है ना. जैसे कि एक्स2 कंजर्वेशन में आप जूलॉजिकल नेशनल जूलॉजिकल पार्क लिखते हो, बोटानिकल गार्डन लिखते हो. इसमें ही आपका एग्जांपल आता है हर्बेरियम, है ना, जो आपके ड्राइड लीव्स होती है उनको सिक्योर करने के लिए, राइट. सो दिस काइंड ऑफ कंजर्वेशन इज दिस. अब नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट नेशनल पार्क, वाइल्डलाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, बिकॉज अकॉर्डिंगली वी कम टू द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. देखो, आई एम टेलिंग यू, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है. नेशनल पार्क और पहले तो सबसे पहले डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द नेशनल पार्क एंड द वाइल्डलाइफ सेंचुरी. नेशनल पार्क्स आर वेरी स्ट्रिक्टेड लिमिटेड एरिया जोन. ठीक है, यहाँ पे देयर इज अ वेरी लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड. ठीक है, ग्रेजिंग कुछ अलाउड नहीं है. ठीक है, कंपेयर टू द नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपकी अलाउड है. नेशनल पार्क कम्स अंडर एनटीसी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, मतलब उसको आपका, हालांकि WPA वर्ल्ड लाइफ
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ही ये तीनों आते हैं, ठीक है, ये तीनों आते हैं, ठीक है. बट द नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर कंसिडर्ड अंडर द नेशनल स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व, इंडिया में बहुत लिमिटेड बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि आपकी यूएन बॉडी कंजर्व, समझ आ गया. ऑफ कोर्स इट विल बी अंडर दैट इंडियन टेरिटरी, so it will be regulated and managed by this, but this is a biological biosphere reserve. अगर suppose that me as the head of the country मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया कि बायोस्फीयर रिजर्व है, वो तब तक नहीं डिक्लेयर होगा जब तक कि यूएन इस पे आके स्टैंप नहीं करेगी ओके दिस इज अ बायोलॉजिकल बायो, ठीक है. नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है. यहाँ पे आपकी एक्टिविटीज अलाउड है, ग्रेजिंग अलाउड है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्रीज भी अलाउड है ना, लिमिटेड एरिया जोन. इसके बाद यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है, बट यही आपका स्टेटमेंट है 2022 और 2023 के प्रीलिम्स के पेपर में, द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है. ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर प्रॉपर रेगुलेशन में आता है, बट बोथ ऑफ दीज अंडर ओनली एंड अंडर द स्टेट गवर्नमेंट ये इसको रेगुलेट कर सकती है, बट बोथ आर द अंडर द हेड ऑफ उसके आईएफएस के, फॉरेस्ट सर्विसेज ही हेड इसको करेगी, ठीक है. बायोस्फीयर में बिल्कुल आपका यूएन बॉडी है, समझ आ गया. नाउ विल टॉक अबाउट दैट. Now we talk about that biodiversity hotspot. Biodiversity hotspot. It is only 4 in India and 35 थे अभी तक, 36 हो गए आई थिंक, 35 कंसिडर करते हैं, 35 in whole world. That means something very important, ठीक है. इंडिया में अगर आप नेशनल पार्क को कंसिडर करोगे मोर देन 50 है, ठीक है, बट 4 है ओनली हॉटस्पॉट. हॉटस्पॉट किसी एरिया को डिक्लेयर करना इज अगेन नॉट अंडर दैट हेड ऑफ दैट कंट्री. देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, यस यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट, दैट्स अबाउट द एंडेमिज्म, है ना, वहां पे कुछ स्पेसिफिक एंडेमिक्स होने चाहिए. बट इंडिया में सपोज दैट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दीस आर द टू कंडीशंस. देखो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर डिफाइंड एज द रीजंस where exceptional concentration of the endemic species are undergoing an exceptional loss of habitat. ये बहुत रेयर है जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे लास्ट क्लास में मेरा लॉस ऑफ हैबिटेट. तो हॉटस्पॉट क्यों बोलते हैं? हॉटस्पॉट इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दीज आर द एरियाज व्हिच आर प्रोटेक्टेड. एक्चुअली इसकी दो कंडीशंस है, इसको आपको अगर छोड़ भी दो, बस इतना देख लो दैट द कांसेप्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज डेवलप्ड बाय दैट नॉर्मन मायर्स इन 1988 when he identified that tropical forest losing its plant species as well habitat. जैसे कि tropical में we have understood in the last class that tropical में आपकी maximum biodiversity है. So to declare any area into the biodiversity hotspot, there are the two conditions. They contain at least, this is a number, 1500 species of the vascular plants found nowhere else on the earth, known as endemic. Endemic species समझ आ गया? जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, ये आपका क्वेश्चन आता है, आपके प्रीलिम्स में भी आ चुका है क्वेश्चन. 2021 तक तो यूपीएससी यूज्ड टू गिव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी फ्रीक्वेंटली, दैट वो कोई स्पीसीज दे देगी और वो बोलेगी दिस इज अ स्पीसीज ऑफ इंडिया, लिसन वेरी केयरफुली, और दिस इज द एंडेमिक स्पीसीज ऑफ द इंडिया, और दिस इज द एंडेमिक स्पीसीज ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? अगेन एग्जैक्टली, ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी होगी, बांग्लादेश में भी होगी, है ना, नेपाल में भी होगी. So it's a very high chances कि वो सब कॉन्टिनेंट आंसर्स ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि which type of climate generally found in India, that the similar type of climate also found in the Pakistan or maybe the Bangladesh, something like that. But some of the species in the Western Ghat, which are Western Ghat में क्या problem है? Western Ghat are generally when we talk about the Western Ghat are the coastal areas. Tropical climate होना चाहिए. बट अगेन 2018, 2019, 2020 तीनों ईयर का क्वेश्चन है. पहले वो नेशनल पार्क यूपीएससी बहुत देती थी, एंड यूपीएससी कैन एनीवन एनी टाइम कैन इट जस्ट रिपीट देयर कांसेप्ट, है ना. तो वेस्टर्न घाट की आपकी जो अनाईमुडी हिल्स है, दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दैट वेस्टर्न घाट, अनाईमुडी हिल्स. इसकी जो आपकी हाइट है वो अराउंड 4000 किलोमीटर प्लस है, 4000 मीटर प्लस है, ठीक है. दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग इन द सेंस ऑफ ऑल्टीट्यूड. तो वी नो दैट एज वी गो अप द टेम्परेचर decreases. So whatever the type of, ध्यान से सुनना, whatever the type of climatic conditions are in that coastal areas, that particular climatic condition are not into that height. So वहां पे a little bit temperate climate आ जाता है because of the altitude, not because of the latitude or the longitude. But generally when we form this, तो ये आपका temperate zone होता है ना, या polar areas के नीचे temperate zone, या आपका subpolar and something like that.
ठीक है, सब ट्रॉपिकल है नॉट। बट अगर आप ट्रॉपिकल जोन में है, स्टिल इफ यू आर फीलिंग, ऐसी इसी बेसिस पे एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 साल यूपीएससी ने बच्चों को बेवकूफ बनाया है, क्योंकि हम लोग बस पढ़ते हैं वेस्टर्न घाट इन द कोस्ट, बट हम लोग वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट अनाई मोडी इज द टॉप ऑफ द हिल, है ना, दैट टेम्परेचर इज रिड्यूसिंग। सो यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज है जो इस एरिया में ही सिर्फ एंडेमिक है और रिस्ट्रिक्टेड है। So because of that, Western Ghat is also one of your biodiversity hotspot. We'll talk about it. ठीक है? तो दो कंडीशन है आपकी ये वाली, contains at least 1500 species of vascular plant found nowhere else on the earth, known as endemic species, and have lost at least 70% of its primary native vegetation. 70% लॉस कर चुके होंगे बिकॉज यहाँ पे बहुत दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द एंडेमिज्म एंड बिकॉज दे हैव, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर हैविंग दैट वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो भी वहां पे सपोज अगर आपके पास एक ऐसी स्पीसीज है या ऐसा कुछ प्लांट्स है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बट दैट कैन सर्वाइव ओनली इन द वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाइमेट, ऑब्वियसली यू वांट टू प्रोटेक्ट इट ना, सो इसीलिए इस एरिया को हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड में रखते हैं, दैट इज योर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, इसमें आपके इंडिया में मेनली, वैसे तो आपके ओवरऑल वर्ल्ड में 35 है, ये आपके 35 के नाम है, याद करना हो कर लेना, नहीं करना हो मत करना, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस सी वंस एटलीस्ट। ठीक है, among the 35 hotspot of the world, among the 35 hotspot of the world, there's a 4 found in India. These areas country is exceptionally rich in flowering plants, reptiles, amphibians, butterflies and some species of mammals. पहला क्या आपका वेस्टर्न घाट, the type of climate, near 77% of the amphibians, 62% of the reptile species found here are found nowhere else. हो गया endemism? Yes, yes. कोई भी इकोसिस्टम क्यों? Good. Yes, vascular plant. What is a vascular plant, by the way? Have the xylem and phloem. So marine plant doesn't have the xylem and phloem. उतने नहीं है। अब आपने क्वेश्चन रेस किया है तो देखो इसमें कहीं भी जनरली नहीं ही होगा, कोई भी मरीन बॉडी नहीं ही होगी। ठीक है, 70% वाला एंडेमिज्म नहीं होगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्या है, वेस्टर्न घाट, नियरली 77% ऑफ द एम्फीबियंस यहाँ पर ये है। फिर आपका आता है ईस्टर्न हिमालयास। ईस्टर्न हिमालयास एक्चुअली हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं, सपोज दैट दिस इज योर इंडियन। अच्छा, जब भी आप लोग ये बनाना मैं इसको इंक्लूड कर दूंगी, ट्राई टू, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आया हुआ है क्वेश्चन, तो ट्राई टू मेक अ वेरी स्मॉल डायग्राम ओवर देयर, इंडिया का मैप, प्लीज मेक इट, दैट इज वन ऑफ योर स्टेप टू हैव द गुड मार्क्स। ठीक है, सपोज दैट आपने इंडिया का मैप बनाया, ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा है बनाना, ठीक है, इंडिया की मैप को आप ऐसे दिखा सकते हो, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया और एक ही हो गया। आई एम शोइंग यू वेयर इट इज लोकेटेड। ठीक है, ऐसे करके आप सिंपल, कितना टाइम लगा इसको बनाने में, मुश्किल से 5 सेकेंड, बट प्लीज मेक इट। ठीक है, तो एक आपका ईस्टर्न हिमालय हो गया, ये भी आपका अच्छा ईस्टर्न हिमालय, क्योंकि जो आपका मिडिल हिमालय जो आपका बड़ा सबसे, वहां पे इतना लो टेम्परेचर दैट इट कैन नॉट कंटेन दैट मच स्पीसीज। ठीक है, बट जनरली हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं। थर्ड वन आपका हो गया इंडो बर्मा रीजन, म्यांमार वाला। ठीक है, फिर फोर्थ वन आ गया सुंदरलैंड। ठीक है, ये आपका पूरा बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप इट इज अंडरस्टूडेबल। 1 घंटे में इतना लिख तो पाते नहीं हम लोग फॉर श्योर। ठीक है, एक टॉपिक इसमें रह गया, दैट इज योर, 2 टॉपिक ओनली रह गए, एक आपका रह गया है, अच्छा भी तो रह गया, इकोसिस्टम रह गया, मेक द एंडिंग, हैबिटेट एंड नीश। इस पे भी क्वेश्चन बहुत आए, नीश पे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आए हैं, हैबिटेट एंड नीश। यस यस, श्योर श्योर अनुष्का। वैस्कुलर प्लांट स्पीसीज होने चाहिए। गुड, यस, वेरी गुड, पक्का पूछ लिया क्वेश्चन, नाउ यू हैव द आंसर। अगर रेस्टोरेंट प्लांट ज्यादा होंगे तो वहाँ पर मतलब श्योर है कि ज्यादा जो इंसेक्ट है या मतलब बायोडाइवर्सिटी रिच होगी। Why? There's a one word for this answer. सोर्सेज अवेलेबल ज्यादा होंगे ना प्लांट। In short, plants are बच्चों reducers. How would you consider the survival of the animal without the consideration of plant? When we talk about Amazonian rainforest, we talk about forest. No doubt about it that there are millions of species of the animals if we combinedly think of. But that particular, जैसे कि that is why ecology में we talk about that food chain, food web.
अगर आपके किसी भी इकोसिस्टम में अगर आपके प्लांट्स नहीं होंगे, नो मैटर व्हाट, तो आपकी एनिमल स्पीसीज नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, इवन कार्निवोरस में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, बिकॉज कार्निवोरस आर फीडिंग ऑन द हर्बीवोरस. अब हम लोग बात करते हैं बाय द प्लांट. नाउ वी टॉक अबाउट द वैस्कुलर प्लांट्स. ठीक है, वैस्कुलर प्लांट व्हेन वी टॉक अबाउट द डिवीजन ऑफ द प्लांट्स, so we have the concept of that. first आपका क्या आता है, एलिगी. फिर आपका आता है एलिगी के बाद यस ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. आपका वेस्कुलर प्लांट, वेस्कुलर डेवलपमेंट कहां से शुरू होता है, जिम्नो. ब्रायोफाइटा में नहीं, दैट्स अ ग्रीन मैट. ऑलमोस्ट आपका टेरिडोफाइटा को बोलते हैं स्नेक ऑफ द प्लांट स्पीसीज. ठीक है, जैसे कि सिमिलर आपका एनिमल में कंसीडर करूं, एनिमल में क्या होता है, पाइसेस, देन एम्फीबियंस, then reptiles, then aves and then आप लोग बिलीव करो इवोल्यूशन में जब हम लोग एक चार्ट बताएंगे, अनुष्का यू हैव आस्क्ड वेरी गुड क्वेश्चन, एक्चुअली इट्स नॉट अ सिली क्वेश्चन. तो ब्रायोफाइट्स को व्हाट वी कॉल एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. सो यू विल सी इन दैट डिफरेंट स्पेसिफिक पीरियड, जैसे जैसे सपोज दैट इफ वी टॉक अबाउट दैट जुरासिक और द सीनोजोइक और व्हाटएवर द पीरियड, तो स्पेसिफिक पीरियड में स्पेसिफिक प्लांट्स ग्रो करे थे. ठीक है, और उस प्लांट्स पे सरवाइव करने वाले एनिमल्स भी उसी पीरियड में ग्रो करें. देखो सेम रिसेम्बलेंस है. रेप्टाइल्स में आप लोग स्नेक्स कंसीडर करते हो, एंड हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स आर योर फर्स्ट कंप्लीट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. लैंड डेवलपमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एवोल्यूशन. टेरिडोफाइट आर द फर्स्ट प्लांट्स हैविंग दैट वैस्कुलर डेवलपमेंट. देखो जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में क्या आते हैं आपके, पाइनस एंड साइकस. दे हैव द स्पेसिफिक काइंड, ऑल्दो इनसे डेवलप्ड है ये, but they have the specific kind of area to develop. Generally हल्की सी टेम्परेट में ही ग्रो करते हैं, कोनी लीव्स होती हैं, राइट. एव्स स्पेसिफिक हैं, although they are the developed. इनके जिम्नोस्पर्म मतलब नो कवर्ड सीड, इनमें सीड तो पाया जाता है, दैट मींस ये भी होम्योथर्मल है, ये भी होम्योथर्मल, बट दे आर नो कवर्ड सीड, नेकेड है. एग्जैक्टली नेकेड सीड है, मतलब दे हैव द स्पेसिफिक काइंड ऑफ अडैप्टेशन. सिमिलरली एज एन एव्स, एव्स में भी देयर स्पेसिफिक काइंड ऑफ अडैप्टेशन. देन वी टॉक अबाउट दैट एंजियोस्पर्म एंड द मैमल्स. समझ आ गया. सो वैस्कुलर प्लांट्स क्यों, क्योंकि एल्गी कैन ग्रो एनीवेयर ऑलमोस्ट. एम्फीबिया को वैसे भी जरूरत ही चाहिए दोनों ही काइंड ऑफ स्पीसीज की. तो एक्चुअली आपका वैस्कुलर डेवलपमेंट टेरिडोफाइट से स्टार्ट होता है. ठीक है, दैट इज. रेप्टाइल्स में हम लोग फर्दर बात करते हैं, हम लोग में जब एनिमल्स पढ़ते हैं, सो रेप्टाइल्स आर एक्चुअली द कनेक्टिंग लिंक मेजरली. ठीक है, सो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स नहीं सर्वाइव कर पाएंगे. एंड प्लांट्स आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट एंड द रिचनेस ऑफ दैट इकोसिस्टम. ठीक है, आजकल एक और भी बड़ा फ्रॉड हो रहा है, पता है क्या. अभी तक तो पुलिस कॉल करती थी, सुना होगा आप लोगों ने केस, है ना. हाँ हाँ हाँ, ये हो रहा है. और जो तैयारी करने वाले वन ऑफ माय स्टूडेंट हैज कॉल्ड मी एंड सेड दैट, मैंने कहा नो नीड टू वरी, है ना. एंड दे आर टॉकिंग सच स्टूपिड थिंग. आजकल एक एलपीजी वाला ड्रामा हो रहा है. सो अगर ऐसी कोई कॉल आए, प्लीज अवॉइड इट कम्प्लीटली. यस, बिकॉज वी नो वी आर इन दैट ऑफ फील्ड कि हमारे पास वी आर द काइंड ऑफ, क्योंकि हमारे नंबर्स होते हैं इधर उधर, जनरली हो जाते हैं. तो किसी कोई भी कॉल आए पुलिस की, एलपीजी की, आपके यहाँ सिलेंडर है, they just say, they are the very heinous people, I would say. They just say कि आपका एलपीजी बाहर रखा है, आपका, और they will say properly date, especially females, कि आपने एलपीजी बुक करा था एंड आपका एलपीजी जस्ट नीचे रखा हुआ है, आप आके ले लो. Do not open the gate. Okay, it's a kind of, yeah, we know that, and every time there's a kind of things, and we should protect ourselves from that. Never ever सीधे कॉल डिस्कनेक्ट कर दो. Do not even फोन में देखना भी नहीं है कि आपने इस डेट पे करा है. No need to open the calendar or anything. सिंपल से नो, और कुछ बोलो ही मत, सिंपल डिस्कनेक्ट द कॉल. ठीक है, दिस इज रिसेंटली हैपेंड विद वन ऑफ माय स्टूडेंट, दैट्स अ फीमेल आल्सो. ठीक है, और यहीं पर है वो आरएन की है. सो बेटर टू अवॉइड दैट कॉल. उठा लो, उठाने में कोई नहीं जाता, बिकॉज ऑफ कोर्स नंबर आप उठाओगे, इट्स कम विद अ वेरी कॉमन नंबर. उठा लो, बट उसके बाद सीधे सुन लो उसकी बात और डिस्कनेक्ट कर दो. और हाँ, आपको पता चल गया एलपीजी के नाम से, डिस्कनेक्ट. ओके, राइट अराउंड हैबिटेट एंड नीश. हैबिटेट एंड नीश. देखो इसको थोड़ा सा समझ लो, although it's a very easy concept, we just have to make a note about it. Habitat is simple, इसके ज्यादा I'll not explain. Habitat is simple, the living place. ठीक है, that means suppose that if we talk about India में रहने दो. ठीक है, if we talk about the India, suppose that you are living in your Delhi, so Delhi is your habitat.
ठीक है, India is a kind of ecosystem, or I'll specify more. And in that Delhi, why you have chosen the ORN or the Karol Bagh? Because that is also you are how you recognize yourself as a student or the UPSC aspirant. So your functional thing is being a study. So if you have taken the room in the ORN or the Karol Bagh, that means your functional aspect is your ORN or Karol. That is your niche. Okay? Yes, niche is can be overlapped with the habitat for sure. 90% time niche will be overlapping with the habitat. But there is also case that niche, maybe suppose that me, I am living in a Hajj Khas, but I come to the Karol Bagh. Niche can be different too, but majority of the time niche and habitat can be overlap. So you can say that niche is a specific unit which can be recognized as a functional unit. ठीक है, ये आपका प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है. अगेन एमसीक्यू में आपका देखोगे niche वर्ड इकोसिस्टम्स, आप लोगों के सिलेबस में इकोसिस्टम है ना, प्रीलिम्स में है इकोसिस्टम. इकोसिस्टम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इकोलॉजी. यस, इकोलॉजी में niche इज अ वेरी कॉमन टॉपिक. ठीक है, सो हैबिtat इज ओवरऑल. और अगर बेटर कंसीडर करो, सपोज दैट यू आर लिविंग एट योर होम, तो इन योर होम, ठीक है, दिस इज योर होम, इन योर होम आप भी रह रहे हो, ठीक है, यू इज ऑल्सो लिविंग, योर फादर इज ऑल्सो लिविंग, योर मदर इज ऑल्सो लिविंग, योर ब्रदर इज ऑल्सो लिविंग. सो दैट मीन्स योर होम इज अ हैबिtat ऑफ दीज 4 पीपल. रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं, स्पेसिफिक नहीं है. बट सपोज दैट यू अभी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो या जो भी है, यू आर बीइंग कॉर्नर्ड वन ऑफ द रूम ऑफ योरसेल्फ. क्यों आपने कॉर्नर किया है? बिकॉज आपको वहां पे क्या करना है, फंक्शन करना है. फंक्शन इज क्या आपका, स्टडी. दैट पर्टिकुलर रूम you can say to any one of your family member which is with which you are sharing the common habitat, do not enter into that particular room. Why? Because that's a functional unit. So niche पे कभी भी generally overlapping नहीं होती है. Habitat is overlapping. जैसे कि अगर हम लोग बात करें, so forest is a common habitat for the elephants too, and also for the lions too, or maybe the tiger too. ठीक है, but they do not live in the same niche. जनरली जो टाइगर्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक एरिया होता है ना, और जो एलिफेंट्स होते हैं दे डू नॉट ओवरलैप विद देयर फंक्शनल यूनिट और द नीश. चलो ह्यूमंस में तो आपका ये आ गया. ठीक है, जैसे कि व्हाई दिस गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर लॉयंस, है ना. So we know that generally animals recognizes or define the pattern according to their habitat. आप लॉयन को देखो और आप गिर नेशनल पार्क, दैट इज अ काइंड ऑफ, इतना वो रिच नहीं है ना, तो वहां पे हल्का सा ब्राउनिश श्रब्स और ग्रासेस पाए जाते हैं. यस एग्जैक्टली, दैट्स अ काइंड ऑफ मिमिक्री. तो डेजर्ट इकोसिस्टम में, डेजर्ट नहीं कहेंगे बट काइंड ऑफ दैट ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आपके दोनों पाए जा रहे हैं. वहां पे आपका लॉयन भी पाया जाएगा, वहां पे आपके एलिफेंट, डायनासोरस वो भी पाए जाएंगे. बट द एरिया एनिमल में, क्योंकि आपका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है एनिमल में, द रिप्रोडक्शन कैपेसिटी इज मेजॉरिटी ऑफ दैट फंक्शन. वो वाला जो एरिया होगा वो लैप नहीं करेगा, ओवरलैप किसी अनदर एनिमल के साथ. तो हैबिtat इज अ कॉमन एरिया और द ओवरलैपिंग विद अनदर स्पीसीज टू. यस, अनदर स्पीसीज टू इवन, बट नीश इज वेरी स्पेसिफिक. ठीक है, जैसे कि आपका अगेन इसमें एग्जांपल आई विल टेल यू, डार्विन फिंचेस. डार्विन फिंचेस हैव द कॉमन एरिया, ऑल ओवर लिविंग ऑन दैट कॉमन ट्री. ठीक है, वो उनका कॉमन हैबिटेट था. बट एज द एवोल्यूशन हैज बीन चेंज्ड, दे उनका एनिमल्स का फंक्शनल यूनिट क्या है, उनका फूड और रिप्रोडक्शन, दैट्स द टू थिंग. उन्होंने यूपीएससी प्रिपेयर करना है. ठीक है, सो फूड उनका फंक्शनल एरिया था. सो उन्होंने क्या किया, अपना नीश स्पेसिफाई कर लिया. दे हैव अकॉर्डिंग टू देयर नीश स्पेसिफिकेशन. दैट इज व्हाई नीश स्पेसिफिकेशन इज आल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द स्पीशिएशन. समझ आ गया, क्योंकि फूड है उनके लिए. फूड इज अ बेसिक थिंग फॉर विच दे कैन अडाप्ट और दे कैन मॉडिफाई. ठीक है, उन्होंने अपनी बीक चेंज कर ली. सो सम ऑफ वेंट फॉर दैट ग्रासलैंड, सम ऑफ देम लाइक दैट. ठीक है, और नीश, हैबिटेट एंड नीश. लिखो नीश, फर्स्ट मेक द हेडिंग नीश. The term niche was first used by Joseph Grinnell. Joseph Grinnell, Grinnel, in 1971. Joseph Grinnell in 1971. He stated that
he stated that niche inverted comma में करना. He stated that niche is the ultimate distributional unit and functional space within which each species is held by its structural and functional and instinctive limitations. Its structural, functional and instinctive limitation. क्लोज करो इन्वर्टेड कॉमा को. नीश का डेफिनेशन आएगा, सिंपली जस्ट ऐड दैट. ठीक है, राइट दैट ओवर. फुल स्टॉप. राइट डाउन. No two species, next में लिखो, no two species in the same general territory or habitat. No two species in the same general territory or habitat can occupy for long identically the same ecological niche. Full stop. While the habitat of any species can be described as the total extent of its geological range of dispersal. Full stop. Next point पे लिखो. It can be defined in a single phrase. Niche. It can be defined in a single phrase as the totality of abiotic factors impacting biotic factors to which organisms or species expose in the area or dispersal geographic range. Full stop. In many cases, even the habitat of the species is highly specialized that is called microhabitat. Which depends on microenvironment or microclimatic factors
Next point. To understand how a species fit into the fabric of ecosystem, it is not enough to understand and describe the organism's microhabitat, but also the functional role within the community, Full stop. Next. The ecological niche is a property of the community The ecological niche is a property of community and it represent within specific place. First one. Next point, niche. It is an inclusive term. That involves not only the physical space, but also the functional role. Underline that, functional role. But also the functional role in the community, and its position is specific and its position is specifically gradient with other conditions of existence. Next, make the heading. Types of ecological niche has three aspects. Ecological niche has three aspects. First, special habitat niche. Second, trophic niche. Fourth, hypervolume niche. Sorry, third, not fourth. Hypervolume. Third one का कोई मतलब नहीं है. It is just classified. Hypervolume niche. देखो इसमें तो we are getting it that in a community, suppose that if we talk about the community of ORN, okay, the community of ORN has multiple type of people. Suppose that if we talk specifically about the function unit. अच्छा आप लोगों का जब प्रिंस में क्वेश्चन आता है, so niche पे ना multiple points लिखे होंगे. Choose one point in which the term functional is mentioned. Simple, ठीक है. Niche का मतलब simple है functional aspect of any species, individual or whatever. क्योंकि आप लोग अगर पीवाई के देखोगे इसमें मल्टीपल कंफ्यूजन है. अगर फंक्शनल सपोज दैट 1 से 2 वर्ड में मिला है, सो फंक्शनल में आप देखोगे विच इज नॉट कनेक्टिंग विद द हैबिटेट.
ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ हैबिटेट दैट इज ट्रू, फंक्शनल हैबिटेट दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। ऐसे मतलब आप लोग देखना फंक्शनल वर्ड है, इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, दैट यू इन योर स्टडी ग्रुप, यस यस फंक्शनल मतलब ऑफ कोर्स आपका जो ऑक्यूपेशन हो, फंक्शनल या ऑक्यूपेशनल वर्ड जहां पे भी होगा आप उसको यूज करोगे, ठीक है। देखो हैबिटेट नीश, फिर आप व्हाट इज ट्रॉफिक हैबिटेट, सबको पता है व्हाट इज ट्रॉफिक, वेयर वी हैव यूज्ड इट, यस कोई बात नहीं, दैट इज योर ट्रॉफिक, दैट मींस व्हाट इट इज इंडिकेटिंग, yes whatever the energy का division, the biomass का division, in simple term if you talk about what is the trophic, सबका अपना फंक्शन बता रहा है वो, इकोसिस्टम में द मेजर फंक्शन इज द फूड, एक कम्युनिटी को और एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से की रिप्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन अभी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, दैट इज अ ट्रॉफिक सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, द ट्रॉफिक सिस्टम ऑफ प्लांट्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लांट, प्रोड्यूसर, राइट। देन वी टॉक अबाउट हियर द टॉपिक वन, ओवरऑल ये तो आपके कंज्यूमर है, बट दिस इज योर, तो कंज्यूमर को सबको एक साथ रख देना चाहिए था, राइट, बट दिस इज योर हार्बीवोरस, दैट मींस फीडिंग ऑन इट। देन वी टॉक अबाउट द consumers or the carnivorous or the secondary consumer that are feeding on it, that means these consumers are feeding on it, these consumers cannot feed on it, ठीक है। that means trophic is simple specific position of the community, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये grasses है, तो grasses why we are seeing the community but not the species, because grasses are eaten by the rabbits and also the cows and also the goats। टॉपिक तो हम लोग इकोसिस्टम के सेंस में बात कर रहे हैं ना, when we talk about the specific individual yes we will talk about separately, जैसे कि suppose that if we talk about the rabbit species पे अगर आप आ जाओ तो rabbit can be eaten by the snake but snake cannot eat the cow, वो आप लोग और स्पेसिफिक हो जाओगे, but in the trophic system all of these three are herbivorous। या यहाँ पे आ जाओ then snake, jackal or something like that, that means or the frog, that means they can eat on this, ठीक है। so that is a trophic, trophic means structural and the functional position of the community in an ecosystem, that's it, reproduction से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो क्या लिखाओ, yes first make the spatial not special, गलत spelling, SPACIL spatial slash habitat niche, SPACIL कहाँ बच्चा, नहीं यही है SPACIL, हाँ TIL भी वही यूके यूएस वाली इंग्लिश का प्रॉब्लम है, हाँ SPACIL spatial। This concept was presented by O'Neill in 1967। अच्छा क्या मिलता है ये लिखने से हमें, कॉन्सेप्ट तो है नहीं है, वेटेज आता है ना। जैसे कि मैं आपको सपोज कोई बात रैंडमली बताऊं, फिर मैं बताऊं कि दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली आई हैव रेड, तो अपने आप वो वेटेज आएगा। एग्जामिनर की कॉपी में भी दे नो दैट यू हैव कवर्ड इट इन अ डीप सेंस, दैट्स व्हाई यू नो द साइंटिस्ट, उन्होंने कुछ काम किया भाई, उसको हमें याद रखना चाहिए, है ना। ओनील इन 1967, habitat niche is a habitat or the area, habitat niche is a habitat or the area which is particularly defined by specific environmental conditions, for the species, for specific species in which the resources available combining with the abiotic and biotic factors, are suitable in the physical location, PHY वाला physical location। example coral reef fish,
coral reef fish, comma, damsel fish, DAMSEL, damsel fish, ब्रैकेट में लिखूं, occupy a small specific territory, occupy a small specific territory at coral head, at coral head, coral reef fish, हाँ ठीक है, इसी में लिखो नेक्स्ट, parrot fish, parrot fish, occupy, occupy the surface of the reef entirely, surface of the reef, coral reef entirely. What does that mean? देखो, जैसे कि suppose that this is a coral reef, ठीक है, it's a very weird structure. I know. Some of the fishes, of course, coral reef, we know that coral reef provides a kind of biodiversity. Why we say that? How they are sustaining the other biodiversity. Coral reef is again a very common topic. Okay, first is the shelter, that is our habitat or spatial niche. Other than that, okay, the nutrition, good, yes. And we know that the coral reef is overall the combination of the plant and that coelacanth, right? We know that hydroencys. देखो, एक तो फर्स्ट आपका रीजन है, कोई भी चीज बायोडाइवर्सिटी हाउ इट विल प्रोवाइडिंग, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ काइंड ऑफ स्टेबल प्लेस इन दैट फ्लोइंग मरीन इकोसिस्टम, ठीक है, हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है तो हम इसको हैबिटेट में रखेंगे. व्हाई वी आर गिविंग इन द एग्जांपल ऑफ द कोरल रीफ इनटू द स्पेशल और हैबिटेट नीश. देखो अगेन फूड तो अवेलेबिलिटी है ही है. देखो जैसे कि कोरल रीफ का जो स्ट्रक्चर है, सम ऑफ द एनिमल्स है ना, यहाँ पे आपकी फिशेस भी रहती है, इंसेक्ट्स भी रहते हैं, सम ऑफ द ऑर्थोपोड्स आल्सो लिव, क्रस्टेशियंस आल्सो लिव, सम ऑफ द मोलस्कस आल्सो लिव, ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं, प्लांट्स आल्सो लिव, ठीक है. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज आर ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट ओनली प्रोवाइडिंग द हैबिटेट, बट यहाँ पे स्पीसीज इसलिए रह रही हैं क्योंकि सपोज दैट एक फिश है, फिश अपने एग लाके यहाँ पे रख पा रही है, ठीक है. या डिफरेंट टाइप ऑफ फिश कैन एबल टू keep their fishes or maybe the protecting overall system because they are kind of defensive. हर इंसान का अलग अलग नेचर ऑफ बिहेवियर होता है, so they are protecting the overall coral reef. Maybe they have the chitinous kind of skills कि अगर कोई बड़ा एनिमल इस पे आके अटैक करेगा so they will just start defending the coral reef. so उनका एक फंक्शन, वो अपने आप को से प्रोटेक्ट नहीं कर रही है. so coral reef is a kind of ecosystem, है ना, एक फुल इकोसिस्टम जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं. सो कुछ फिशेस यहाँ पे आगे रख रही हैं, कुछ फिशेस आर द डीप वाली फिशेस, उनको यहाँ पे फिश रखना है. कुछ फिशेस के एग बहुत बड़े हैं तो वो मे बी उनको हमेशा ऑक्सीजन चाहिए, तो मे बी वो नीचे जहाँ पे प्लांट्स हैं वो वहां पे अपने फिशेस रख रहे हैं. सो यहाँ पे हैबिट, दैट इज वी आर मतलब रख अल्टीमेटली नहीं, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं कर रही हूँ, बट हैबिटेट भी केवल नहीं है. हैबिटेट तो सिर्फ आप जहाँ रह रहे हो दैट इज हैबिटेट. यहाँ पे हम लोग why we are keeping into that spatial or the spatial or the habitat niche, because the function of that particular population or the species or the community to go further, to grow further. और वो कैसे कर पाएंगे? वो प्रोटेक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है. इवन द कोरल रीफ हैज आल्सो द साइट, क्योंकि अगर वो इधर कहीं भी रखेंगे तो मे बी अगर और कोई बायोटिक डेंजर नहीं आएगा तो अबायोटिक दैट मरीन वेव्स कैन बी हार्म, ठीक है. सो इसीलिए इसका हैबिटेट तो है बट हैबिटेट नीश है because of the functional aspect of the reproductive ability. Got it? Next add-on, trophic niche. Next, trophic niche describes the functional role of an organism, describes the functional role of an organisms in an ecosystem, based on its feeding habits. Based on its feeding habits. In this case, two species live in the same habitat,
but occupy different trophic niche. But occupy different trophic, not tropic, trophic niche because of differences in food habits. Example, example, example. Two aquatic bugs, ऐसे लिखूं, two aquatic bugs named Notonecta and Coroxia, Notonecta and Coroxia dash वहां पे करके लिखो, living in same habitat, living in same habitat slash same pond slash same pond, but occupy different niche, but occupy different niche. That is Notonecta feed, Notonecta feed on small phytoplanktons, on small phytoplanktons, while Coroxia is feeding on small zooplanktons. They are small insects. Next example क्या होगा? Darwin finches in Galapagos Island. एक और example लिखो. Another example is Darwin finches in Galapagos Island. Living on the same island. Darwin finches living on the same island. Living in Galapagos Island. उस island का नाम Galapagos था. Which Darwin went. Galapagos. Living in same island, but developed different niche, such as tree finches, which feed on the tree seeds and fruits, while rest started feeding on insects and other resources. Next make the heading. Hypervolume niche. This concept was proposed by G.E. Hutchinson in 1965. It defines a species niche. It defines the species niche apostrophe s. जिस वर्ड का लास्ट एस से एंड होता है उसमें हम लोग ऐसे नहीं लगाते, उसमें हम लोग अपॉस्ट्रोफी ऐसे लगाते हैं वर्ड लिखने के बाद. जैसे स्पीसीज का नीश लिखना है तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे. ठीक है, ऐसे अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते, एस के बाद लगाते हैं अपॉस्ट्रोफी. स्पीसीज नीश एज with n dimensional hypervolume factors, as with n मतलब number of dimension, n dimensional hypervolume factors
hypervolume factors, where each dimensions represent an environmental variables or resources that affect the species' ability to survive and reproduce. The species' ability to survive and reproduce. Full stop. This concept where niche is considered as an abiotic, as an abstract, or more than three dimensions, such as n-dimensional consideration, for inhabitat, feeding and reproduction. देखो, एक तो आपने हैबिटेट डिफाइन कर दिया, एक आपने फंक्शनल लोड डिफाइन कर दिया. So hypervolume is simple that like multiple factor can also impact that specific area. मतलब hypervolume में something is not defined. It is simply saying that sometimes niche can also be defined by the various factors. Maybe feeding कहीं और है, maybe reproduction कहीं और है, ठीक है? मतलब just that. Okay, next write down. एक और इसमें पॉइंट लिख लो. This is the fundamental niche of the species. इसी में लिखना. This is fundamental niche. Underline that fundamental. This is the fundamental niche of the species. Where it can overlap between two different species and shows the competition in between them, Okay, full stop. Therefore this concept refers to the totality of abiotic and biotic factor. This concept refers to the totality of abiotic and biotic factors. Totality of abiotic and biotic factors to which the species is uniquely adapted. Last point लिखो. Advantage of niche क्या हो सकते हैं? What is the advantage of niche? Good. Resource division. Specification, reproductive specification. Better say that, है ना? Stability. There's a one word I want to listen. In sense of that resource में. Avoiding competition. Avoid करेंगे. Feeding habit will be different, so we'll avoid the competition, right? As soon as and resource में आप दो word लिख सकते हो. Resource diversification. Multiple resources will have. Suppose that if we are dividing on the basis of the feeding habitat. तो मेरा feeding अब अलग है. Suppose that I'll be vegan, maybe you will be the vegetarian, and someone will be the मान लो non-vegetarian. So we have the different animal के sense में तो feeding is the main thing. ठीक है?
आप ह्यूमन के सेंस में कंसीडर करो, सपोज दैट यू विल बी फोकसिंग फॉर सम डिफरेंट एग्जाम, आई विल बी फोकसिंग फॉर डिफरेंट एग्जाम, शी विल बी फोकसिंग, तो क्या हो जाएगा, कंपटीशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. सो दैट मीन्स पर्टिकुलर स्पीसीज को एनर्जी अपनी कम वेस्ट करनी पड़ेगी, सर्वाइबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. दैट मीन्स रिसोर्स डिवर्सिफिकेशन. ठीक है, यही सारे एडवांटेज. फटाफट फटाफट राइट डाउन एडवांटेज. The major advantage which organism get is the major advantage which organism get by occupying different niche, by occupying different niche is is avoiding is avoiding and escaping from continuous intense competition, continuous intense competition. Next, the niche occupied by any species, the niche occupied by any species is favorable to their physical and suitable survival environment, increasing the population growth, increasing the overall population growth. Next, automatic segregation of the species. Can we say that microhabitat and niche are the same thing? Can we say that? Can we say that microhabitat and niche are the same thing? Yes, no, simple. Yes. Rohit, but answer na this. Can we say that microhabitat and niche are the same thing? Yes, no. How it would be the microhabitat and niche are the same thing? What if in the microhabitat you are not performing your functions? What if that particular microhabitat is not providing you that all of the conditions? आपको घर में रखा जा रहा है, आप दिल्ली आ गए, ऐसे कंसीडर करो, आप अपने घर से दिल्ली आ गए, दिल्ली आना is the purpose for your function, but still if in your Delhi is your microhabitat because of the specific competition environment whatever you think of, आप क्यों दिल्ली आए हो? आप एक कंपटीशन फील कर रहे हो ना, घर पे बैठ के भी तैयारी होती है ऑब्वियसली. Suppose that you come to Delhi, still you are not able to find that hostel, PG or whatever the room in which you can perform your efficiently. That is a microhabitat. ठीक है, microhabitat मतलब simple है, एक whatever the condition in which you can survive. Survival and functional guys are the different thing. ठीक है, माइक्रो क्लाइमेट अगर मैं बोलती तो शायद आप लोग गेस करते हैं, बट माइक्रो हैबिटेट विल नॉट बी कंसीडर द सेम. हमने जब माइक्रो हैबिटेट वाला पॉइंट लिखा इसमें हमने लिखा दैट इज द माइक्रो हैबिटेट. ठीक है, क्लाइमेटिक में why we can say the climatic factor because climatic conditions are able to define your functions. ठीक है, until that particular organism, suppose that हम लोग उसको रख दें, लॉयन को कंसीडर करें. ठीक है, लॉयन को जनरली हम लोग गिर नेशनल पार्क में रख रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ मिमिक्री और सम काइंड ऑफ टाइम. ठीक है, या फिर ऐसा करो राइनोसेरॉस को रखो, राइनोसेरॉस पे सपोज दैट लॉयन को रख दो, तो लॉयन को आपने डेजर्ट या गिर नेशनल पार्क में रख दिया, दैट इज अ माइक्रो हैबिटेट. ठीक है, आप कहीं से भी उठा के इसको रख रहे हो, बट इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग उसका फंक्शन या उसकी फीडिंग हैबिट आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, दैट विल नॉट एबल टू सर्वाइव ना. फंक्शन इसका खत्म नहीं रहा, वो तो बस रह रहा है. अगर कोई स्पीसीज इंडेंजर्ड कंडीशन में जाती है या क्रिटिकल इंडेंजर्ड में जाती है, in that condition that particular species is just living in the micro habitat. जैसे कि सपोज दैट हमने प्रोजेक्ट वो करा, क्या लाया हमने अभी, चीता. ठीक है, चीता को वी ट्राइड टू प्रोटेक्ट, बट इनिशियली क्या हो रहा था, सो मेनी चीताज वर डाइंग बिकॉज हम उनको हैबिटेट तो प्रोवाइड कर रहे थे, हम उसको एक पर्टिकुलर हैबिट दे रहे थे,
है ना, उनको एक बहुत स्पेसिफिक कंडीशन में रख रहे थे, फिर उसको हम लोग बाद में जाके उसमें छोड़ रहे थे, बट स्टिल वहां पे जाने के बाद वो डेड हो जा रहे थे बिकॉज उनका नीश स्पेसिफाई नहीं हो पा रहा था, ऑल्दो वी वर प्रोवाइडिंग द माइक्रो हैबिटेट, ठीक है, वॉट एवर द रीजन, नीश में आपका फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल सपोज फीडिंग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दे डू नॉट नो, है ना, तो माइक्रो हैबिटेट और नीश आर नॉट द सेम, ठीक है, दे कैन बी ओवरलैप बट दे आर नॉट द सेम। सेकंड क्या लिखा हमने, automatic segregation of a species into its different niches, to inherited behavior patterns, or imprinting avoids the inherited behavior patterns, ethology, inherited behavior patterns or imprinting avoids the greater expenditure of energy and loss of time that would be analysis for their specific adaptation and survival, that would be analysis of their specific adaptation and survival. Example, fast moving fishes generally inherited the swimming pattern from their juvenile stage and segregate their functional niche. अब वो कहाँ जाएंगी, फास्ट मूविंग है ना, दोनों का एक्वेटिक, दोनों का द हैबिटेट इज एक्वेटिक और द मरीन और व्हाटएवर एक्वेटिक यू कैन कंसीडर, तो जो आपकी वेव्स होती हैं, ठीक है, जहां पे आपका फास्ट मूविंग करंट चलती है, वो आपकी कहाँ पे सरवाइव कर पाएंगी, ऊपर भी, सरफेस पे भी, वाइल नीचे आपकी स्लो मूविंग अडाप्ट कर पा रही है, ये ऑटोमेटिक सेग्रीगेशन, बट दैट्स द फंक्शनल नीश। अगर इसको स्लो मूविंग को हम लोग ऊपर भेज देंगे, दैट नॉट एबल टू सर्वाइव, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन, segregation into niches also avoid confusion, segregation into niche also avoid confusions of activities and responsibilities and their role between the organisms in the community, and permits more orderly and efficient life cycle. एग्जाम्पल बताओ ऐसा स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, tell me the example where in that community you are dividing their role and responsibilities. ह्यूमन को छोड़ दो, एनिमल के कंसीडर में बात करो, fishes also and social insects, anyone, bees, ants, any social insects, yes, termites, है ना, write it on. एग्जाम्पल इन सोशल इंसेक्ट्स, देखो जैसे बीज में क्या होता है, ड्रोन अलग है, वर्कर्स अलग है, देखो बीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द नीश, इसमें उनका फीडिंग पैटर्न अलग होता है, रॉयल जेलीज एंड ऑल, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर डिफरेंट फंक्शन और उसके अकॉर्डिंग इनकी लाइफ साइकिल भी अलग होती है, ठीक है, और वो रहते भी अलग अलग है, ठीक है, द फंक्शनल नीड्स
स्पेशल, ये बीज आप बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं। सोशल इंसेक्ट्स जैसे कि हनी बीज, insects, sorry, ants, termites, whatever. Next, the segregation in different niches permits, segregation in different niches permits the occupancy of large number of species, the occupancy of large number of species which favors and divide the available resources, which favor and divide the available resources which may also lead further the speciation. Example, Darwin finches. ठीक है, लास्ट लिख लो। इन 1974, ये स्टार है, एक स्टार बना के पॉइंट लिखो। इन 1974 Candide, the scientist, in 1974 scientist named Candide defined the advantage of a species as more distinct which can avoid the conflict with its neighbor and live a life that is orderly, productive and quite efficient. ठीक है, finished. अभी there's a what else the topic has been left, इकोलॉजिकल सक्सेशन है। आप लोग को यहाँ से एक इकोलॉजी की बुक इशू हुई है, कल आप उसको लेके आएंगे। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन ही सिर्फ वहां से करना है। देखो, फूड चेन, फूड वेब वी ऑल नो, ऐसा कुछ नहीं है जो हमें नहीं पता है। ठीक है, बट उसका कंटेंट सपोज 10 मार्क्स में आ जाएगा तो आप लोग क्या लिखोगे? फूड चेन पता है, इट्स अ लीनियर सीरीज, फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ दैट फूड सोर्स। ठीक है, सो आई एम थिंकिंग टू प्रोवाइड द पीडीएफ, चलेगा? लिखना इतना कुछ जरूरी नहीं, कोई बहुत डीप कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरा भी पेपर 2 हमारा बाकी है, उसमें बहुत टाइम लगेगा और बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है, सो फूड चेन एंड फूड वेब हम लोग इसमें करेंगे। एनर्जी वाला जो पिरामिड है वो आई विल एक्सप्लेन, आई प्रॉपर मेक द नोट्स आल्सो। ठीक है, एक बार बेसिक कवर हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट इकोलॉजिकल सक्सेशन, फूड चेन, फूड वेब और बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल, नाइट्रोजन का एक्सप्लेन इट थॉरली, आप लोग जिसका भी बोलोगे एक्सप्लेन इट। ठीक है, एंड नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और सल्फर और कार्बन, ये 4 का मेनली आ रखा है। ठीक है, फूड एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट हम लोग देखो, जो आपके 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, 4 डिफरेंट फंक्शनल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम है। So one is the productivity, the second is detritivores or decomposition, third is energy recycling and fourth is nutrient recycling. Energy recycling I'll explain it, producer सबको पता है क्या है, decomposer सबको पता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास नोट होंगे, नोट सब चीज के होंगे। ठीक है, whatever the syllabus is, it has been mentioned. Nutrient cycle में आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल है, इस पे I'll explain whatever the compound you guys want, और इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो टुमारो इन द क्लास we'll talk 2 things. फर्स्ट हम लोग बात करेंगे लॉट का वोल्टेरा मॉडल का, क्योंकि आ रखा है, और एनर्जी सिस्टम। एंड टुमारो विल फिनिश द इकोलॉजी, मोस्ट प्रोबेबली विल फिनिश द इकोलॉजी। अगर कोई टॉपिक छूट रहा होगा देन आई विल सी दैट, एंड अगर कल टाइम मिला तो हम लोग एक बार इकोलॉजी का पीवाईक्यूज भी देखेंगे। ठीक है, एंड वी विल स्टार्ट द इथोलॉजी फ्रॉम नेक्स्ट वन। ठीक है, उसमें वही आपके प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग ये सारे करके वो। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई है नहीं, मतलब देखो इतना सारा लिखने का, नीश का थोड़ा सा था समझाने का, अदरवाइज ऐसा सोचो कुछ इतना सा कॉन्सेप्चुअल नहीं है जो हमारा छूट रहा होगा। कंटेंट ऑब्वियसली यू विल हैव दैट। ओके, थैंक यू गाइस।
पीडीएफ में अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, एनीथिंग विल बी डाउट, एनी टाइम यू कैन आस्क मी, इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बैच. ठीक है.